Bombay is probably the only place in India where the various groups meet and feel at home with each other. So if you can make the whole of India like Bombay, then you've got a different India. सो ये गाइस वेलकम बैक टू द अनदर व्लॉग और आप सभी का एक बेहतरीन व्लॉग में स्वागत है। बहुत समय से मैं व्लॉग शूट नहीं कर रहा था क्योंकि यार थोड़ा कुछ काम में इतना बिजी था कि पूछो मत। बोलते हैं ना कि बहुत सारा रश और बर्डन आ गया था काम का। सो वही, और फिलहाल तो कल हमारी छुट्टी थी तो सोचा कि सुबह मॉर्निंग में टाइम मिलेगा तो थोड़ा सा छोटा सा व्लॉग शूट कर लेंगे। सो वही, और हम खाना हो गया और फिलहाल अभी हमारा चल रहा है चाय। सो वही, भाई देखो यहाँ की चाय, चाय के अंदर दूध नहीं होता, इन लोग चाय के अंदर क्रीम डालते हैं जैसे तो फिर उससे क्या चाय का कलर आ जाता है और चाय का टेस्ट आ जाता है। सो मुझे लगता है ये तो हेल्दी रहेगा क्योंकि हमारे इंडिया में तो दूध की चाय बनती है, तो उससे क्या है, लोग आजकल बहुत से इंस्टाग्राम पे सब चल रहा है कि चाय पीना बंद कर दो, एनॉल वगैरह निकोटीन वगैरह ज़्यादा होता है, तो वही। सो फिलहाल तो गाइज यहाँ पे मैंने सुबह सुबह मैंने टिकटॉक पे वीडियो देखा और वो वीडियो इतना इंटरेस्टिंग था और सुनने लायक था। क्योंकि यहाँ पे हमारा एक्चुअली क्या है कि सिंगापुर में भी हमारा इंडियन एम्बेसी है, तो वहाँ के एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ने सिंगापुर के पीएम को दो क्वेश्चन किए। जो कि पहला क्वेश्चन था कि अगर आपने जिस जिस तरह सिंगापुर को आपने बदला उस तरह आप इंडिया को बदल सकते हो, जैसे सिंगापुर को आपने बदला, सिंगापुर के जैसे आप बदल सकते हो, तो आप करना चाहेंगे। और तो बाद में जो सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर ने जो जवाब दिया, वो सुनने लायक था। और मुझे लगता है कि ये वीडियो देखने के बाद आप लोग भी बोलोगे कि हाँ, इस प्राइम मिनिस्टर ने कुछ कुछ बातें सही की है। सो वही, और आपके लिए वो वीडियो मैंने सेव किया है। आप चाहे तो आप वीडियो देख सकते हो, मैं अभी प्ले करूँगा ये वीडियो, तो आप ज़रा एंड तक देखना वीडियो और सुनना क्या बोल रहे हैं हमारे सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर। सो वही, और उसके बाद मुझे कमेंट सेशन में ज़रा बताना है क्या सही है कि नहीं है, पहली बात। Sir, my name is Srivatsa Krishna. I'm an officer of the Indian Administrative Service and a huge admirer of your work. I think you're the only true nation builder in this world apart from Kemal Ataturk. I have two questions for you. One, if someone were to give you India today, can you do to India what you did to Singapore over the last 3 decades? And flowing from that, second, what according to you are the fundamental canons of good governance which you would like to give as an advice to our politicians? Thank you. First, no single person can change India because it speaks 320 different languages. Manmohan Singh can speak Hindi. I'm not sure they can speak Punjabi. I think he can. But at any one time, he will have only about 200 million people out of 1.2 billion people understanding him. So that is a structural problem which cannot be overcome. If you compare that with China, 90% speak one language. And when the president of China or the leader in China speaks, 90% understand him. So it's a much easier country to lead than India. Secondly, as I've explained, India consists of many different dialect and nation groups. There is no connection between the history and development of the Tamil language or the Telugu language and Punjabi. So India is a creation of the British Raj and the railway system it built.
and therefore it has its limitations. What was the second question? What? Well, they are quite simple. First, integrity, absence of corruption. Second, meritocracy, the best people for the best jobs. And third, a fair, level playing field for everybody. We were lucky in Singapore because we started with a plastic young society. So we chose English as our working language, which was a neutral platform for everybody. Nobody had the advantage. Secondly, it's a small country and therefore you can have your edict run throughout the whole country. India is very different. You can say something in Delhi and somebody in Bangalore decides something differently, and that's that. I mean, so I do not think it's possible for anybody to do to India what it takes to bring India together quickly. It's diverse, therefore it has to work at its own speed, its own cultural tempo, and each marches to a different drumbeat. It took me a long time to understand this because, like many students of British Empire history, I thought India was more than a concept. India was India. Because I grew up and I went to India, I realized that there are many different Indias. And they're still true today. Yes, you have the English language that binds the English-speaking Indians, but that's only up to a point. I think the English-speaking Madrasi and the English-speaking Bombay is probably the only place in India where the various groups meet and feel at home with each other. So if you can make the whole of India like Bombay, then you've got a different India. सो आई होप गाइस सबको ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा। जिस किसी ने भी पूरा वीडियो देखा है तो उसको समझ में आ गया रहेगा कि सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर क्या बोलना चाह रहे हैं और क्या वो खुद भी आए इंडिया में तो भी वो चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे इंडिया में जो रिलीजन और जो लैंग्वेजेस है इतनी सारी है और हर जगह के पॉलिटिशियन इतने अलग अलग है और पूछो मत। सो बहुत ही मुश्किल है, जब तक गवर्नमेंट का कोई बात ना सुने तब तक इम्पॉसिबल है चेंज करना इंडिया को। सो जैसा है वैसा ही चला रहे। और में भी और करप्शन की बात करें तो करप्शन तो यार भरपूर है, लाइक भर पेट है, क्योंकि एक नॉर्मल एक पॉलिटिशियन की सैलरी कितनी होती है और वो कितने करोड़ों की गाड़ी में घूमते हैं आप सभी को पता है। सो बोलने की ज़रूरत नहीं है। सो वही, और आई होप सबको ये व्लॉग अच्छा लगा रहेगा। तो व्लॉग अच्छा लगा रहेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। और इसी के साथ हम मिलेंगे बहुत ही बेहतरीन व्लॉग्स के साथ, क्योंकि हम मंडे से ट्राई कर रहे हैं कि बाहर जाके सब एक्सप्लोर करें और आपको सब दिखाए यार, क्योंकि हम इसलिए बैठे तो हैं यहाँ पे कि हम यहाँ पे एक्सप्लोर करें और आप सभी को दिखाए कि क्या है कैसा है यहाँ पे और आना चाहिए नहीं आना चाहिए। सो वही, इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय।